हेलो एवरीवन, इमिनेंस एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क्स हम पहले डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? Explain scope of microeconomics. Explain the scope of microeconomics. Micro and macroeconomics. There are two questions are there related with the microeconomics and macroeconomics. And what is data? Define national income. What is given goods? What is frequency distribution? What is equilibrium price? What is secondary data? What is marginal cost? Define economic growth. What is demand? What is profit? What is ratio? So these are the important questions in the section 1 and come to the section 2. सेक्शन 2 में यहाँ पर देखिए आप लोग, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट इज़ रियल इनकम, explain the relationship between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics which is very very important in economics, so इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग. Explain the source of secondary data in India. Explain the national income. What is need for statistical data? What is real income? Explain the different or non-factor income. And here it is, define macroeconomics and define macroeconomics. What do you mean by law of demand? What do you mean by production unit? So these are the important questions in second section. Okay, so here it is, section number 3. Explain the meaning of economic development. Distinguish between micro and macroeconomics. What are the various determinants of elasticity of demand? Explain the concept of fiscal deficit and budget deficit. What do you mean by price elasticity of demand and explain its types? What are the general objectives of Indian 5-year plan? 7th one, distinguish between economic development and economic growth, which is very very important. What do you mean by internal economics? Distinguish between primary and secondary goods. And last but not least, here it is, distinguish between direct and indirect taxes. These all are important questions. Okay, so here it is, last but not least, the section number 4. Okay, section number 4 आपका लास्ट सेक्शन होगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी में मिलेंगे. वेटेज है ये आपका, ये 8 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चंस. ओके, सो हियर इट इज़, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी पॉलिसी? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. How is marginal equilibrium price determined through demand curve and supply curve? Explain with the help of diagram. इसमें मैंने with the help of diagram नहीं डाला है, उसके साथ पढ़ लीजिए आप लोग. What is money? State various form of money. And here it is, 7th, explain the relationship between consumption and production. And 8th one is, what is mean by term supply? Explain market supply. State the main changes in economic policy in 1991. Last question is, what are the uses of national income? These are the most important question in economics, so learn it and best of luck of your examination, board examination. और चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.